just to share all those resources and to centralize the software management. So that why we need to centralize all those things, so that we can have rights to share or access all those resources that are available on the network. Clear? So this is the different terminologies that we can use in this Java networking part. Like we have a IP address, protocol is there, port number, MAC address, connection oriented and connection layer. So I hope you are clear with all these things, because you have done many times in your previous subjects, or in different topics you have studied all the. But still we just have a overview of that what is the IP address. That is unique number assigned to a node of a network. So when we talk about a node means a system. Okay, so a computer that is available on a network. So that is regarding the IP address. Okay, so I hope you are clear with this IP address, and you have done in so much detail that how we can generate all those things on this IP address. Next is the protocol form. So protocol is basically a set of rules. Okay, so that is followed by different, we can say, the nodes on a network to communicate with each other. Okay, so if two machines or two nodes wants to communicate with each other, they must follow some particular protocol for that. Okay, so that is a protocol. Third one is your port number. So port number is used to uniquely identify different application. So it helps you to identify different applications over here. So it acts as a communication endpoint between application. Okay, so like we want to communicate with another, communication is required between two applications. Okay, so within a system, so we can assign that particular port number. So port number is associated with the IP address for communication between two applications. So why we require this port number? For the communication between two applications. So you must remember this difference, that IP address is defined, assigned to a particular node of a network, and what is port number? That is assigned to a different application in a system. Similarly, we have a MAC address, that is a media access control. Okay, that is a unique identifier for network interface controller. Okay, so that is also a MAC address is there. Similarly, we have a connection oriented and a connection less. So when we talk about connection oriented, that is acknowledged by, acknowledgement is sent by the receiver. So whomsoever will receive that particular message will acknowledge the sender that I have received that particular message over. So it is a reliable, but it is quite slow, because we are using that the concept of connection oriented protocol, that is TCP. Okay, so similarly we have a connection less protocol, in which acknowledgement is not sent by the receiver part. Okay, so we are not sending any type of acknowledgement in this connection less. So it is not so reliable, but it is far. So we use the concept of datagrams in this. So that is user datagram protocol. And similarly, socket is what? That socket is an endpoint between two-way communication. So this is the thing that we require. So these are some of the terms that we might be using in this networking portion. So when we will discuss all those things, you will be able to understand that why we require that, what are the different things that we require while communicating between two nodes on a network. So there is another class over here, that is a Java URL. Okay. So what we define by this Java URL, that will represent a URL over here. So what is a URL? That is Uniform Resource Locator. So it can provides you, it points to a resource on the World Wide Web. So whatever the machine, whatever the, we can say that resources that is available on that World Wide Web. World Wide Web is a network. Okay, so we can have that information by using the class of URL in Java. So it contains many information, like it can tell you regarding the protocol. Okay, it can tell you regarding the server name or IP address. Okay, and it can have that port number over here, and the file name or a directory name. So everything that is available in this Java URL class. So these are some of the methods that are available in this Java URL. And like we have a get protocol, that it will return the protocol of the URL. Get host. Okay, so it will tell you the host name, port number, and the file number.
Okay, so this is regarding this. These are some of the classes in this particular networking part. We will discuss some of the classes over here. So that will tell us that how we can use this particular URL class. Okay, so there is one program related to this Java URL. So I just show you that particular thing. So just wait, I am just sharing. Okay, so I just run this program that I show you one program related to this Java URL. So we have a simply like we have a URL one. I have given any username for this particular class. Okay, so this is the predefined URL class with us available with us. Okay, so what we want that we want to know the information regarding to this particular address. Okay, so Java provide in Java networking, it provides us with various methods that can help you to know about the various protocol, host name, port number, and the file name. Okay, so we can define all those things by using this particular method. So you have seen in this particular slide also that we have a different methods over here. Like we have this get protocol, get host, get port number, and get file. So what basically purpose of all these methods are there that whenever you will pass a URL over here, so it can provides you all those information related to that particular URL. Okay, so we what we are doing over here, we are simply passing a this URL over here. Okay, and we can get all those information. So let's run this particular program and you can see the output. Here is Java C and the name of my class is URL1. So we are having URL1 dot Java. Okay, so I just run this program. So see, you can get this protocol name over here that is HTTP. Okay, so we have a host name that is a www.gmail.com. So port number is any number that can be defined and we don't have any particular file name over here. So that's why it is empty. Now let's suppose if there is any site and I want to open some particular page over there, like history page could be there, home page. So you can get that particular file name in there. But in my situation, I am just passing this particular host name, so no file name is available. Okay, so this is simple. We can say that these are some simple user defined classes that we can use in Java networking. Okay, so before we start with that communication between two machines, we will just see that how we can use this particular inbuilt this methods inbuilt, some classes are there. Okay, so we can use all those particular thing in this by passing this using this method of URL class. Yes, Anchal, any problem? Yes, Anchal. मैम वो फाइल नेम वाला कंसेप्ट बताना। फाइल नेम होता है जैसे मैं यहाँ पर लिख देती कुछ जैसे स्लैश डाल के मैं कुछ दे देती कि मैंने अपनी जीमेल ही मान लो खोली होती है यहाँ पर। ठीक है, यस तो वो मैम। पर्टिकुलर वो पेज के बारे में इंफॉर्मेशन बता देता है। लाइक आपने एजीसी में यू हैव ओपन दैट सीएससी डिपार्टमेंट, तो मैंने आगे कुछ एड्रेस नहीं ना पास किया इसके, सो मैम दैट्स वाई। वो यूआरएल में पास करेंगे हम। हाँ हाँ, यूआरएल में ही पास करेंगे। लाइक मैं इसके आगे लिख दूँ कुछ ऐसे होम लिख दूँ, ठीक है,
तो इस केस में क्या होगा फिर, ये मुझे जैसे स्लैश में लिख देती हूँ, होम लिख देती हूँ यहाँ पर, ठीक है। सो ये आपको पास करेगा, बट ये वैलिड एड्रेस नहीं है ना इस केस में, तो वो शायद नहीं Yes, देगा ma'am. आउटपुट। आई कैन जस्ट चेक इट कि ये आपको आउटपुट देगा कि नहीं। यस, इट इज गिविंग, ठीक है। Yes, सो ma'am. जो भी आप फाइल नेम साथ में पास करोगे, इट कैन गिव यू दैट पर्टिकुलर वैल्यू ओवर हियर, ठीक है। जैसे आपने कोई भी लिंक खोला है, तो यू वांट द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दैट पर्टिकुलर लिंक, ठीक है, कि उस लिंक के अंदर अंदर क्या क्या चीजें पास की हैं आपने, तो यू कैन गेट ऑल दोस इंफॉर्मेशन। Clear? So these are the simple inbuilt classes only, that by passing that particular URL, how you can get information related to its protocol, host name, port number, or a file number. ठीक है, file name. So you can get all those information using this predefined methods over here. Clear? Okay, so next thing is that after this particular form, the next method that we can have over here, that is a URL connection class. Okay, now what is this URL connection class? That will represent a communication link between URL and the application. So this class can be used to read and write data to the specified resource referred by the URL. So this is the URL connection class over here. Okay, so ये this is also one of the inbuilt class, ठीक है। So what URL connection class represents, that will represent the communication link between the URL and the application. So when you want to read and write some specific data by that particular on that particular URL, you can use this connection class. Okay, so again we have a open connection method of URL that will return the object of this particular URL connection class. ठीक है, सो वी हैव ओपन कनेक्शन मेथड। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज ए कनेक्शन क्लास, दैट विल रिप्रेजेंट द कम्युनिकेशन लिंक बिटवीन द यूआरएल एंड योर एप्लीकेशन। ठीक है, सो हाउ यू कैन गेट द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर यूआरएल कनेक्शन क्लास, बाय यूजिंग द ओपन कनेक्शन मेथड ओवर हियर। ठीक है, तो ये हम अगेन वी विल इम्प्लीमेंट दैट पर्टिकुलर प्रोग्राम, बट यू जस्ट सी दैट हाउ वी कैन यूज ऑल दोस थिंग्स। ठीक है, नेक्स्ट इज दैट डिस्प्लेइंग द सोर्स कोड ऑफ ए वेब पेज बाय यूआरएल कनेक्शन क्लास। अब ये क्या होता है, यूआरएल कनेक्शन क्लास क्या करेगा, इट कैन डिस्प्ले ऑल द डेटा ऑफ ए वेब पेज बाय यूजिंग द गेट इनपुट स्ट्रीम मेथड। ठीक है, तो हमारे पास अगर मान लो कोई भी वेब पेज मैंने खोला है एंड आई नीड टू सी द इंफॉर्मेशन regarding that particular web page, I can use this get input stream method. ठीक है, so this get input stream method will return all the data of the specified URL that can be read and displayed. ठीक है, तो इट कैन डिस्प्ले वट एवर द वेब। अब आपको पता है कि वेब पेजेस कैसे हम बनाते हैं, यूजिंग दैट जावा स्क्रिप्ट, ठीक है, या यूजिंग HTML लैंग्वेज। तो जो भी उस सोर्स कोड होगा ना उस वेब पेज का, दैट कैन बी अवेलेबल विद दिस पर्टिकुलर URL कनेक्शन क्लास। ठीक है, अब इसमें सिंपली अगेन देयर इज ए प्रोग्राम, आई जस्ट शो यू दैट पर्टिकुलर प्रोग्राम ओवर हियर लाइक दिस। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, लाइक ये मेरे पास www.gmail. है ये, and you know that how we can get that we are creating the object of this particular URL connection class by using the open connection method। ये किया था हमने ये PPT में, we have discussed that we can use open connection method of URL class that will return the object of the URL connection। ठीक है, so again we have used this particular open connection URL। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या किया है, that we are getting the object for this particular URL connection class। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, we are just passing the input stream। So there is a concept of input stream and output stream। I think you are clear with all those things, जो आपने पीछे भी फाइल हैंडलिंग वगैरह जो बाकी इसमें किया होगा बाकी लैंग्वेजेस में। As such there is no we are not discussing that the concepts of file handling in Java, but we will be using one or the another method in the program itself। ठीक है, तो हमने क्या किया, इनपुट स्ट्रीम से वी हैव टेकन वन ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड व्हाट वी आर डूइंग ओवर हियर, वी आर गेटिंग दैट गेट इनपुट स्ट्रीम। अब ये गेट इनपुट स्ट्रीम हमें क्यों चाहिए था, if you remember this particular get input stream like here, so this will return all the data specified by the URL in the stream। so we are specifying all those data that is represented by that particular URL। तो वो सारी चीज हमने किसमें
डिफाइन कर दी इसमें गेट इनपुट स्ट्रीम में। ठीक है, सो हम क्या कर रहे हैं, वाइल आई स्ट्रीम डॉट रीड, रीड यू नो दैट व्हेन वी आर रीडिंग सम डेटा फ्रॉम द फाइल, ठीक है, तो जब तक वो एंड इक्वल टू -1, तो क्या हो, इट जस्ट प्रिंट ऑल दोज डेटा इस फॉर्म में, करेक्टर की फॉर्म में। नाउ लेट्स सी इसकी आउटपुट क्या आएगी हमारे पास। सो आई एम नॉट गोइंग सो मच इन डिटेल ऑफ दिस इनपुट स्ट्रीम एंड आउटपुट स्ट्रीम, because there we may have we may have some syntaxes difference. Sorry, we may have that some syntax is different, but rest the working of that input stream and output streams is same as we have discussed in the previous language. ठीक है, तो हमारे पास क्या है, while I equal to stream read till we get the last of that particular document. Now let's suppose I run this again for this gmail.com. I want to have that source code of all that page. So I am running over here Java scene, and we have connection example dot java. Okay, so I just run this program. So see, okay, so this is the source code for this particular URL. Clear? So ये हमने simply क्या करना है, let's suppose if we want to generate the source code in this particular Java language, by using this Java language we can pass this URL connection class over here. Clear? So simply ये पेज को कैसे लिखा गया है, इसकी सारी वो किस तरह की है, ठीक है, that is in the form of a HTML part, and we can see all those things. This is the source code of a this particular URL. Clear? So again, these are some of the topics that has been mentioned, like if you want to know the information regarding that particular URL, or you want to generate the source code for that particular URL page. Okay, so these are two of the method. We have that Java URL class, and another one is the this correction class. Clear? Now the next thing that is important, that is the socket programming. I hope these two things are clear to you. These was just simply mentioned in your syllabus, that we just need to tell you that how we can get information of that particular URL, and how we can get the source code of that particular URL. Clear? So these are the two simple we can say that inbuilt classes that we can use. I hope these two things are clear to you. Kindly raise your hand, because the next topic that we are going to start, that is quite important, because that will help you to communicate between two this machines over here, or how we can pass this information, or how we can pass messages between client and that server part. Clear? So we will start with this particular Java socket programming. So I just implement all those program with you, that may help you if you are interested in making projects related to your this particular part. ठीक है, तो मैं अभी आपको आई जस्ट शो यू दैट सॉकेट प्रोग्रामिंग. सो यू जस्ट see to this, that how we can start with this particular socket programming. Okay, and after that I will just implement all those programs. So socket programming is used for communication between application running on different JRE. ठीक है, so what is this JRE? That is Java runtime environment. So socket programming, what we want, and then we need to communicate on a network. Okay, so in such a form that this is the basically the communication is between the applications. Okay, but that application may be on different system, different nodes, or we can say their computers, or a host on a network. So socket programming can be connection oriented or connection less. So socket and server socket classes we use for the connection oriented. Just remember these terms, socket and this server socket classes are used for the connection oriented socket programming.
ठीक है. So datagram socket and datagram packet. So always remember UDP, that is user datagram packet. So that is used for the connectionless. So we use this datagram socket and datagram packet classes for connectionless socket programming. Clear? So in our syllabus we will be discussing regarding the socket and the server socket. That means we are doing that connection oriented socket programming. Okay. And but like I am discussing with you socket and server socket, you can make projects on this datagram socket and packet classes if you are interested in transferring all those data in the connectionless mode over there. Okay. So there are few things that you must remember over here. uh, Okay. So the first thing is that there are two types of a transmission. One is connection oriented, and another one is the connection less. So when we talk about connection oriented, that means we are talking about TCP. Okay, that is transmission control protocol. Okay, so in that TCP form, we have two types of a classes. One is your server socket class, another one is your socket class. When we talk about server socket class, that means we are acting on as a server machine. Okay, so when we talk about simple socket class, that means we are talking about that particular client machine. Okay, so socket class is simply an endpoint for communication between the machine. Okay, so this basically socket class is used to create a socket over here. Okay, so just remember we are using two types of a classes over here. Look, okay, one is the socket class and another one is your server socket class. So socket class, when we talk about, that means we are talking about the client machine. So that particular client machine can have these three methods, or this particular socket class can have these three methods. That is get input stream, that will return the input stream attached with this socket. Okay, get output stream, that can return output stream attached with this socket, and finally it will close that particular socket. Clear? Next is the server socket class. So server socket class can be used to create a server socket. So this object is used to establish communication between with the clients. तो हमें server socket class क्यों चाहिए? We require this on the server part. ठीक है? That can help us to establish communication with the clients. ठीक है? तो इसमें दो ही मेथड होते हैं, सॉकेट एक्सेप्ट एंड द क्लोज मेथड. सो सॉकेट एक्सेप्ट क्या करेगा? इट विल रिटर्न द सॉकेट. रिटर्न सॉकेट मतलब इट विल रिटर्न द, जो भी सॉकेट कहाँ से बनी, क्लाइंट ने बनाई. ठीक है, सो इट विल जस्ट एक्नॉलेज द क्लाइंट दैट इट हैज रिसीव दैट पर्टिकुलर सॉकेट एंड इट विल एस्टेब्लिश अ कनेक्शन बिटवीन द सर्वर एंड द सॉकेट पार्ट. क्लियर? Now I just may implement these two programs. So what I will do, I just want कि मैं side by side आपको दोनों program लिख कर बताऊं. ठीक है, so that you can understand that how we can implement all those things. ठीक है, so you just wait, I just open another. ठीक है, so this is one of your program and another. Okay, chalo. Okay, I will start with this program. Now there are two types of a communication in networking part. One is your one way communication and the another one is the two way communication. One way communication में क्या होगा कि simply we have that message. ठीक है, we will make a connection between this client and the server. ठीक है, client message भेजेगा और server बस उसको acknowledge करेगा. That is the one way communication. ठीक है, now let's start. I will start with this particular implementation for one way communication. So you can see over here, first of all I will import a particular file package over here. Okay, that will help me to use all those classes, predefined classes in Java. So the very first thing is that I will use input output package over here, that is dot star. Why we require this input output package? Just to read and write in a particular file. Okay, next we have import dot net dot star. Okay, so this is our another
This is another package that we are using over. So sorry, we have import java dot net dot star. Clear? Next we can have class. Now let's suppose I am defining my class as server 1. Okay, so this is my class over here, that is class server 1. Okay, so again I just save this program as server 1, which is the name of my class. So I just save it as, so that is server 1 dot java. ठीक है, ये मैंने इसको सेव कर दिया. नाउ आई क्रिएट साइड बाय साइड, आई जस्ट इम्प्लीमेंट अनदर प्रोग्राम ऑल्सो. ठीक है, ये सर्वर 1 का है एंड दिस इज फॉर, दैट इज क्लाइंट के लिए. ठीक है, तो मैं दोनों की कोडिंग साइड बाय साइड करूंगी सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड दैट हाउ वी कैन इम्प्लीमेंट ऑल दोज थिंग्स. ठीक है, तो दोनों मशीन में हम कैसे कर सकते हैं. सेम थिंग हम यहाँ पर भी लिखेंगे ऑन द क्लाइंट साइड. ओके, सो आई कैन यूज, आई जस्ट कॉपी ऑल दोज थिंग्स और मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया. ठीक है, नेक्स्ट इज द पार्ट दैट आई एम यूजिंग द क्लास दैट इज client 1. ठीक है, so this is my another class that is client 1. I just save this uh, as client 1. So I am using client 1 dot java. ठीक है, ये लो, दोनों तरफ हो गया. Now the next thing is that I am using, I will define this public static void main. ठीक है, so I am defining my string method over here, string. So I can string argument and here I will. ठीक है, अब सबसे पहले क्या करेंगे हम. ठीक है, हमारे पास क्या करेंगे, दैट वी विल क्रिएट ए सॉकेट फंक्शन. अब एक चीज याद रखना, व्हेन वी विल यूज दिस पर्टिकुलर सॉकेट क्लास we are using for the client machine. So in that client machine, हेलो आंचल, Yes, ma'am. माय वॉइस इज ऑडिबल. Yes, ma'am. ये कनेक्शन क्या टूट रहा है बार बार. मैम बीच में अभी पीछे हुआ था ब्रेक. ओके, ठीक है. यस मैम. Okay, so this is the client machine over here. So what we do, we will first focus on the client machine as it will have to make the connection with the server part. So हम क्या करेंगे, public static void main. Okay, so we will just pass this argument as a string. Okay, so we are passing this particular string argument over here. Now what we will do, we will see that
वी विल क्रिएट यू अब ये क्लाइंट मशीन है तो कौन सी क्लास हम यूज कर रहे हैं दैट इज द सॉकेट क्लास so we use socket now this socket class is the inbuilt class we will create the object for this particular socket class new socket ठीक है अब ये सॉकेट क्लास है क्लाइंट मशीन पर है तो इट विल रिक्वायर टू पैरामीटर्स ओवर हियर ठीक है सो कौन से पैरामीटर्स है हमारे पास इसका वन इज योर आईपी एंड अनदर वन इज योर पोर्ट नंबर तो हम उसको आईपी को कैसे ले रहे हैं एज ए लोकल होस्ट अब ये जो हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं ना वी आर डूइंग दिस कम्युनिकेशन ऑन द सेम मशीन ओनली ठीक है तो हम कोई डिफरेंट यस आंचल okay students now I think that the screen is visible to you ठीक है so we can see that when we define at the client side तो हम क्या करते हैं we require two parameters over here one is your this IP and another one is your port number तो अब हम क्या कर रहे हैं डेट like in my case I am transferring the data on the same machine only ठीक है तो मैं एक ही पर क्लाइंट अपनी मशीन पर क्लाइंट भी बना रही हूँ सर्वर भी बना रही हूँ ठीक है सो व्हाट आई एम पासिंग आई एम यूजिंग न्यू सॉकेट लोकल होस्ट कॉमा और मैं कोई भी पोर्ट नंबर दे रही हूँ लाइक दिस ठीक है सो एनी पोर्ट नंबर कैन आई कैन यूज फॉर दैट ठीक है अब क्या होगा ये चीज हो गया ये मैंने सॉकेट किस में यूज होता है क्लाइंट में वी हैव टू यूज सॉकेट क्लास I have created the object of that particular socket class. I am passing two parameters with it. One is your IP and another one is your port number. ठीक है अब नेक्स्ट चीज क्या होगी मेरे पास that I need to write this particular data. I am just passing this data like data. I will be using data output stream. ठीक है so that is data output stream. This is also inbuilt class for which I am creating that particular object over here and new data output stream ठीक है अब इससे क्या करूंगी मैं that I will just I am just passing my message from the client machine to the this server machine वन वे कम्युनिकेशन है पहले मैंने कनेक्शन एस्टेब्लिश करूंगी एंड सेकेंडली आई एम जस्ट पासिंग माय डेटा फ्रॉम दिस क्लाइंट मशीन टू द सर्वर मशीन ठीक है सर्वर क्या करेगा इट विल रिसीव द डेटा एंड जस्ट शो इट ऑन इट्स पर्टिकुलर मशीन ठीक है सो मैंने क्या किया न्यू डेटा आउटपुट स्ट्रीम एस डॉट गेट आउटपुट स्ट्रीम ठीक है सो आई एम गेटिंग दिस एस डॉट गेट आउटपुट स्ट्रीम ठीक है सो आई एम राइटिंग दिस पर्टिकुलर डेटा ठीक है सो हमारे पास क्या होगा फॉर राइटिंग पार्ट आई रिक्वायर दिस आउटपुट स्ट्रीम ओवर हियर तो मैंने इसको बंद कर लिया अब है डी ओ यू टी ठीक है एंड आई विल यूज दिस राइट यूटीएफ दिस इज अनदर मेथड राइट यूटीएफ ठीक है so what is this right UTF that is unicode transform UTF is for unicode transformation format ठीक है सो इसकी मदद से राइट यूटीएफ मेथड की मदद से हम क्या कर रहे हैं वी आर जस्ट पासिंग राइटिंग अ डेटा ऑन दिस पर्टिकुलर this file or we can say that we are just with the help of this dout object we are writing that content on that particular output stream ठीक है so हमने क्या किया write utf dout dot write utf and let's suppose I am writing welcome to AGC ठीक है so this is welcome to AGC over here
ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है हमारे पास, आई हैव टू क्लोज दिस पर्टिकुलर connection over here, that is close, like this. ठीक है, I am closing this particular session. ठीक है, कनेक्शन ओवर हियर. ठीक है, पहले हमने स्ट्रीम को क्लोज किया, दैट इज डी आउट डॉट क्लोज. डी आउट क्या था, आउटपुट स्ट्रीम. देन वी हैव टू क्लोज दिस पर्टिकुलर सॉकेट ओवर, दैट इज एस डॉट क्लोज. ठीक है, so this is the program that this is the, we can say that code that we are using at the client side over here. Clear? Now there is another method that we will be using over here, that is the flush. Okay, so we are using, I hope you have used in this another language also, that we use this flush method just to see that if we have any characters, okay, so we write them immediately to the intended destination. हमारे पास फ्लैश क्या है कि immediately without waiting for some another source, it will just print that, it will just display that particular thing on the destination side. So we can write like this, d out dot flush over here. ठीक है, सो फ्लश किस लिए करें कि इमीडिएटली जो भी हम यहाँ पर स्ट्रीम पास करेंगे वो इमीडिएटली हमारी सर्वर साइड पर और डेस्टिनेशन सॉरी डेस्टिनेशन साइड पर इट कैन बी डिस्प्ले. क्लियर? अब देर इज ए थिंग कि हमारे पास कुछ यहाँ पर एक्सेप्शंस हो सकती हैं, बिकॉज हमारे पास कनेक्शन ओरिएंटेड हम सब पैरामीटर्स यूज कर रहे हैं. सो वी कैन जस्ट ट्राई ऑल दिस कनेक्शन ओवर हियर, वी कैन राइट ऑल दिस ब्लॉक अंडर दिस ट्राई ब्लॉक. ठीक है, सो वी आर जस्ट राइटिंग ऑल दिस कोड अंडर द ट्राई block over here, and we can handle that particular exception using catch exception e. ठीक है, और यहाँ पर आएगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल. ठीक है, सो आई जस्ट हैंडल दिस पर्टिकुलर एक्सेप्शन बिकॉज देयर कुड बी ए चांस कि हमारे पास कहीं पर कनेक्शन ना बने और कुछ एक्सेप्शन आ जाए बीच में, तो हम उस चीज़ को सबको हैंडल कर सकते हैं. ठीक है, तो हम यहाँ पर इसको बंद कर देते हैं. ओके, सो ब्रैकेट्स बंद हो गए सारे. ये ट्राई का था, एक और दो, एक मेन का है. यहाँ पर भी एक ब्रैकेट रह गया. ओके, क्लियर? तो मैं इसको सेव कर देती हूँ. ठीक है, तो ये तो हो गया क्लाइंट साइड पर. अब सर्वर ने क्या करना है, यहाँ पर जब क्लाइंट ने इट हैज यूज दैट सॉकेट एस ओवर हियर, तो सर्वर का क्या काम है, सर्वर विल रिसीव दैट पर्टिकुलर थिंग. ठीक है, तो हम यहाँ पर अगर मैंने सॉकेट क्लास यूज की है, इफ आई एम यूजिंग दिस सॉकेट क्लास एट द क्लाइंट साइड, सो एट द सर्वर साइड विच क्लास आई विल बी यूजिंग, दैट इज द सर्वर सॉकेट. तो मैं यहाँ पे पहले ही ट्राई ब्लॉक के अंदर आई कैन मेंशन दैट पर्टिकुलर थिंग. ठीक है, सो ट्राई ब्लॉक के अंदर आई कैन यूज सर्वर सॉकेट. ठीक है, सो आई कैन यूज दिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट न्यू सर्वर सॉकेट. ठीक है, अब सर्वर सॉकेट में इस जो हम सर्वर सॉकेट हम मेथड यूज करते हैं वो आपको याद होगा, वी आर यूजिंग दिस सर्वर सॉकेट फॉर द सर्वर साइड. तो इट कंटेन्स ओनली वन पैरामीटर ओवर हियर, विच पैरामीटर, दैट इज ओनली द पोर्ट नंबर. और कौन सा पोर्ट नंबर हमने मेंशन किया यहाँ पर, दिस 4x6. सो वी विल पास दैट पोर्ट नंबर इन दिस पर्टिकुलर सर्वर सॉकेट. ठीक है, अब नेक्स्ट काम क्या होता है, अब सर्वर सॉकेट में दो मेथड्स होते थे इफ यू रिमेंबर, वन इज द एक्सेप्ट मेथड, अनदर वन इज द क्लोज मेथड ओनली. तो हमारे पास क्या करेंगे हम, सॉकेट एस. अब ये जो सॉकेट एस कहाँ पर है, ये क्लाइंट साइड पर है हमारी. ठीक है, सो क्लाइंट साइड का जो ऑब्जेक्ट है दैट विल वी विल दिस एस ऑब्जेक्ट फॉर दिस पर्टिकुलर सर्वर सॉकेट विल accept that particular connection over here. Okay,
So it will establish that particular connection over here. क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, यहाँ पर क्या किया था हमने, सिर्फ एक सॉकेट, वी हैव यूज द सॉकेट क्लास एट द क्लाइंट साइड जस्ट टू पास द आईपी एंड द पोर्ट नंबर. ठीक है, उधर क्या होगा, at the server side that server socket class will assess that particular, we can say that port number over here, and after that it will accept that particular connection. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, डेटा इनपुट स्ट्रीम equal to why data input, because it has to, it is reading that particular data. ठीक है, so we will create use this data input stream. ठीक है, so dis is the object that we are creating, equal to new data input stream. ठीक है, next is s dot. Now what, who will handle that particular thing from which we are getting that information, that is s. ठीक है, जो सॉकेट के थ्रू हमारे पास डेटा आ रहा है, so we are getting s dot get input stream. ठीक है, so that is s dot get input stream. Okay, so this is the code at this side. Now what we are doing, we just reading this, we want to show that particular data, so we are using string str equal to, we will typecast that particular thing using string. ठीक है, using this particular dis. ठीक है, dot read, we are just reading that particular, और किस format में होगा, we have written in that utf format, and again we will read as a read utf method. ठीक है, so this is the read utf method. I know all these terms are quite new to you because आपने ये we are doing for the first time. ठीक है, so ये सारी जो methods हैं, you have to remember all these methods कि हम ये सारी चीजें क्यों use करते हैं. ठीक है, so read utf is just the method that will display all those contents that has been passed with the help of that particular socket class. ठीक है, तो finally हमारे पास क्या होगा, we can generate like this system read भी हो गया. Now we are reading system dot out dot println. Okay, नहीं इतने नहीं है. ठीक है, और हमारे पास we are just we can pass like this, any message you can see that equal to. ठीक है, कहाँ पर आएगा हमारे पास ये मैसेज, that is under this string form. ठीक है, so this str will be containing all those string that you have passed from your client machine to this server machine. Clear? Finally you will close this connection. ठीक है, connection, so ss is the object for the server socket, so ss dot close. ठीक है, and finally we will close this try block catch exception e. Okay, so we will close over here. So I hope this is clear to you that what we have done over here.
first thing that you need to remember, that in the client, on the client side we are using this socket class, and on the server side we are using server socket class. Okay, so this socket class will have two parameters at the client side. One is your IP and the another one is your this particular we can say that port number over here. Okay, so you need to pass these two parameters just to have a connection with the this server part. Next, in our case, what we are doing, there are two types of communication are there. One is the one-way communication, another one is the two-way communication. ठीक है, तो वन वे कम्युनिकेशन में what we can do, we are just passing the message from the client side to the server side. तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हमने सॉकेट एस किया, न्यू सॉकेट, और कनेक्शन हमने यहाँ पर बता दिया that it which particular IP and the port number you are having that particular connection. ठीक है, data output stream is there that we need to pass that particular message to write that particular message. Okay, so with the help of this particular s we are using that get output stream over here. Clear? After that what we are doing, we are just writing that particular message, that is welcome to AGC, and we are directly flushing that particular message, okay, at the destination side. So why we require this flush method? To just display all those things, display all those strings in the method, okay, to this particular at the destination side. So we require this flush method that will immediately flushes that particular message using that particular stream. Okay, so we can write them immediately to the immediately to the given destination. After that we have closed that connection. Okay, we have closed that particular stream. First of all we will close the particular stream, and after that we will close that particular connection over here. On the server side what we are doing, we have to just use that server socket class. Okay, and with the help that server socket class will just require that particular port number over here from which it is getting that connection. Okay, so this it will request that this port number require that particular request for connecting with this particular server part. This server socket will just accept that particular connection. Okay, so it will establish that particular connection using accept method. After that it will use its own stream, that is data input stream. Okay, so we require this stream to read that particular data over here. ठीक है, so simple हमने read यहाँ पर write UTF use किया था to write that particular message. This is the read UTF method, that is for writing reading that particular message, and we are converting that particular message into the string format over here. यहाँ पर string का s capital कर लेते हैं, नहीं तो फिर error आ जाएगा. ठीक है, so this is the same thing. And finally we are closing this particular session, this ss dot close, we have closed this particular connection over here. Clear? So let's see कि ये रन हो जाए. अदरवाइज मैं जो ऑलरेडी मैंने प्रोग्राम बनाया हुआ था, मैं आई जस्ट शो यू दैट पर्टिकुलर प्रोग्राम. सो आई होप कि ये रन हो जाए इस केस में. सो अच्छा, इसके लिए रन करने के लिए द मेन थिंग रिक्वायर, यू रिक्वायर टू कमांड प्रॉम्प्ट हियर. ठीक है, सो दिस इज द वन कमांड प्रॉम्प्ट फॉर सर्वर पार्ट, एंड अगेन आई विल ओपन अनदर कमांड प्रॉम्प्ट. ठीक है, बिकॉज हम वी आर एक्टिंग एज ए टू मशीन्स ओवर हियर. ठीक है, तो मैं दो कमांड प्रॉम्प्ट यहाँ पर रन करूंगी. ऐसा कर लेती हूँ, दिस वन कमांड प्रॉम्प्ट आई रेफर टू दिस पर्टिकुलर मशीन. ठीक है, ये कमांड प्रॉम्प्ट होगी सर्वर के लिए, ये कमांड प्रॉम्प्ट होगी हमारे पास क्लाइंट के लिए. तो आई जस्ट मैं रन करूँगी सी डी जावा, आई जस्ट सेट माय पाथ जावा. ठीक है, तो ये दोनों कमांड प्रॉम्प्ट मैं एक सर्वर के लिए चलाऊंगी. सेकेंड कमांड प्रॉम्प्ट इज फॉर दिस पर्टिकुलर क्लाइंट पार्ट. ठीक है,
तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर आई जस्ट शो यू दैट पीपीटी आल्सो, that in PPT we to execute this program we have to open two command prompts and execute each program. ठीक है, सो हमारे पास क्या होगा कि हमें दो कमांड प्रॉम्प्ट्स बनानी पड़ेंगी एंड वी हैव टू रन बोथ द एप्लीकेशन ऑन देयर रिस्पेक्टिव कमांड प्रॉम्प्ट. ठीक है, ये प्रोग्राम भी खोल लेते हैं क्लाइंट, और ये रहा सर्वर के लिए. ठीक है, सो चलो, अब वी विल फर्स्ट रन दिस पर्टिकुलर जावा सी सर्वर 1.java. ओके, सो इस साइड पर हम करेंगे जावा सी क्लाइंट 1.java. ठीक है, ये रन हो गया क्लाइंट मशीन. ओहो, ये कहाँ से मैंने डॉट डाल दिया. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कंपाइल बोथ द मशीन्स. ठीक है, अब यहाँ पर मैं इसको रन करूँगी पहले, जावा क्लाइंट 1. ठीक है, और यहाँ पर है जावा सर्वर. I just again run this client पर. सी, ठीक है, यहाँ पर मुझे सर्वर को फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल कंपाइल बोथ द दिस मशीन्स. ठीक है, आफ्टर दैट आई विल रन दिस जावा सर्वर 1. वाई सो, बिकॉज आई हैव टू शो दैट पर्टिकुलर मैसेज. ठीक है, सर्वर पहले इसको अलाउ करेगा, ठीक है, कनेक्शन एस्टेब्लिश करेगा, देन ओनली दिस मैसेज विल बी शोन ओवर हियर. ठीक है, सो अगेन आई कैन शो यू इफ यू आर फीलिंग एनी डाउट. लाइक मैं यहाँ पर भी इसको दोबारा से रन कर देती हूँ. ठीक है, तो हमारे पास पहले क्या होगा, दैट आई हैव जस्ट रन बोथ द मशीन, तो मैंने जावा सर्वर 1 कर दिया. ठीक है, एंड दिस इज जावा क्लाइंट 1. ठीक है, सो से आपको सर्वर को इनिशिएट करके देन यू हैव टू रन दिस क्लाइंट पार्ट. क्लियर, कंपाइल दोनों पहले कर लो एंड यू कैन सी दिस इज द वन वे कम्युनिकेशन. ठीक है, ओनली दिस सर्वर 1 इज शोइंग द मैसेज दैट इज अवेलेबल फ्रॉम द क्लाइंट साइड. ठीक है, क्लाइंट ने ये मैसेज पास किया था ना, वेलकम टू एजीसी, एंड इट इज जस्ट शोइंग दैट पर्टिकुलर मैसेज ऑन द स्क्रीन. बस, this is known as a one way communication. We have two way communication also, in which we we will see that we will pass messages from both the sides. ठीक है, so that it will be the part of this two way communication. Clear? So students, if you are clear with this one way communication, kindly raise your hand. I know there could be some little problem also,
because you are doing it for the first time and many terms are new for you. But this, but always remember that is data output stream, input stream, ये सब same है जो हम already, so that's why we are not discussing this in so much detail. ठीक है, तो बट ये है कि बाकी जो आपको चीजें चाहिए फ्लश करना मैसेज को सारा वो भी चीज आप कर चुके हो. द मेन थिंग दैट यू रिक्वायर, यू मस्ट नो द क्लास. ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए कि दोनों के केस में विच क्लास वी आर यूजिंग. ठीक है, तो जब भी हमेशा याद रखना, व्हेन यू आर समटाइम्स अ कोड स्निपेट इज गिवन इन एग्जाम्स, ठीक है, तो उसमें सॉकेट बताया होता है सिंपल. सो ऑलवेज रिमेंबर वी यूज सॉकेट विद द क्लाइंट मशीन, और सर्वर सॉकेट में तो नाम में ही है कि दैट इट विल रेफर टू द सर्वर मशीन ओनली. Clear? So this is one way communication. So I think before moving further we can have a one poll with us. ठीक है, तो आप मैंने से have just given simple question in that poll so that we can complete this two-way communication also in this particular uh, this session only. ठीक है, so you just immediately give your answer so that we can start with another part, that is a two-way communication. So this is the first poll that I am discussing with, I'm launching with you. So kindly answer to this particular poll. Okay, students, I am going to end the poll. So I am sharing results with you. So which package contain classes interfaces for networking? That is java.net. Okay. So you always remember, like this is like in this particular example also we have used this java.net dot star. Okay. So I will share another poll with you also, so that after that we can proceed to this particular. So I'm launching the second poll with you.
Okay, students, I am going to end the poll. Okay, I am sharing results with you. So, which class is used to create servers that listen for either a local client or remote client? That is the server sockets. Okay, so most of the students have given the right answer. So, उनकी रहेगा आकृति, कैन यू हेयर मी? Yes, ma'am. ओके, वो लाइट चली गई थी ना बीच में. ओके. Okay, students, I hope you are clear with this one-way communication. So, shall we start with the two-way part? Two-way communication. So, kindly raise your hands if you want me to start with the two-way communication format. So that is also quite interesting one because at that time we need to pass messages from both sides. ठीक है. So I will try my best कि ये code मैं जल्दी जल्दी से लिख सकूँ. Otherwise I will just show you the already saved code that I am having with you. ठीक है. So we will start with this two-way communication over here. So for this I will start with this particular, that is the server side. Okay, so again I will create this for this two-way communication. I first create a file that is a server side file. So again I will import Java. So this is the if we am have to perform according to this networking part. So I require this .NET package over here. ठीक है. सो ये आ गया. फिर आ गया हमारे पास import java dot input output. Why so using this input output? Because we are reading and writing messages over here. ठीक है. So I will use class server. So let's suppose I am using server 2. ठीक है. So I am using this server 2 over here. Next is again public static void main. Okay, so I'm using string, passing this string arguments, that is string arguments. Okay, so ठीक है. तो I just see कि अगर कोई exception है तो it should immediately explicitly throws that particular exception. ठीक है, throws exception. I hope you might be remembering the purpose of this throws and throw part. So again we have a server socket.
stop it over here. So we are working at the server side. We require the server socket equal to your new server socket, and I just pass this. This is what, this is the port number that we are passing over here. Okay, and at the client side again I can go for it, like just copy all these things so that may save us time. Control C, control V, and we can have like this. So I just change the name, that is client 2, client 2 over here. ठीक है, बाकी तो सब ठीक है इस साइड पे। और अब इसमें क्या करना पड़ेगा मुझे? इफ आई एम यूजिंग, आई हैव टू यूज विच क्लास? दैट इज द सॉकेट क्लास. So I'm using socket s equal to new socket. So in this socket, uh, in this socket we have two parameters over here. One is the IP part and another one is the localhost part. Okay, so we have this. Clear? अब टू वे कम्युनिकेशन में क्या है? Okay, student, just wait for a minute. ओके स्टूडेंट्स, ठीक है. सो हमारे पास क्या है इसमें कि सॉकेट में क्लास एज इट इज रिक्वायर्ड ऑन द क्लाइंट साइड. सो यू नो दैट वी रिक्वायर टू पैरामीटर्स ओवर हियर. वन इज योर लोकल होस्ट, सॉरी, वन इज योर दिस आईपी पार्ट एंड अनदर वन इज योर पोर्ट नंबर ओवर हियर. ठीक है. ये होने के बाद फिर हम क्या करेंगे? अब ये टू वे कम्युनिकेशन है, तो लास्ट टाइम हमने क्या किया था? दैट वी हैव यूज्ड, दैट इज वन वे कम्युनिकेशन इन विच वी आर जस्ट writing that particular message from the client side and server was reading that particular message. ठीक है. But in two way communication at both side, both at both hands, uh, either of the any we can say that operation can be performed. So client can perform reading also, client can perform writing also, and same goes to the server class also. ठीक है. तो हम इसमें क्या करेंगे? That first of all we will, as you know that for writing and reading part we require this data input stream and data output stream. तो हमने क्या किया? Data input stream. ठीक है. So we are using this particular data input stream equal to new data input stream. ठीक है. अब इस केस में हम क्या करेंगे? वी आर पासिंग वन पैरामीटर दैट इज s dot get input stream. ठीक है. So that is get input stream. So this is the parameter for this data input stream that we need to pass with the help of a object of that particular socket class. ठीक है. Next is the data output stream. ठीक है. तो that is d out. Okay. तो again new data output stream. ठीक है. सो हमारे पास आ गया s डॉट गेट आउटपुट
stream. Clear? So again we have to pass this parameter and ठीक है. अब हमने क्या करना है, देयर इज अनदर कंसेप्ट ऑफ ए बफर्ड रीडर. ठीक है. अब ये बफर्ड रीडर क्या करेगा, दैट इट विल सी टू इट दैट टू पास. ठीक है. इट विल स्टोर एनी टाइप ऑफ ए डेटा बिकॉज टू वे कम्युनिकेशन है. ठीक है. तो हम क्या चाहते हैं कि जो हमारे पास दैट इज यूज टू रीड द स्ट्रीम ऑफ द करेक्टर्स फ्रॉम द स्पेसिफाइड स्टोर. ठीक है. सोर्स जो भी हमारे पास बफर रीडर क्या करेगा, दैट इट इज यूज टू रीड द स्ट्रीम ऑफ करेक्टर्स फ्रॉम द स्पेसिफाइड सोर्स. ठीक है. तो ये थोड़ी देर के लिए क्या कर सकता है, हमारे पास जो भी हम इनपुट स्ट्रीम दे रहे हैं इट कैन मैनेज ऑल दोज थिंग्स. बिकॉज हमारे पास टू वे कम्युनिकेशन है, तो कई जगह हम लाइन को रीड कर सकते हैं, कई जगह हम लाइन को राइट कर रहे हैं. बट दिस बफर्ड रीडर, basically reader, when you are using this buffered reader class, that means you are specifically using it to read the stream of characters from the specified source. ठीक है. तो हमारे पास ये किस में आएगा, हमारे पास बफर्ड रीडर में. सिमिलर जो डेटा आउटपुट स्ट्रीम वगैरह है, वो सब की चीजें क्या करता है हमारे पास, जो डेटा आउटपुट स्ट्रीम है या इनपुट स्ट्रीम है. ठीक है. तो आउटपुट स्ट्रीम में वी आर राइटिंग समथिंग. ठीक है. सो इनपुट स्ट्रीम में वी आर रीडिंग समथिंग. और बफर्ड रीडर क्या करेगा, इट विल बफर, यू अंडरस्टैंड ना. सम वी कैन से दैट अ मेमोरी स्टोरेज इज देयर. सो वी आर यूजिंग दिस बफर्ड रीडर टू जस्ट रीड द डेटा. ठीक है. ताकि हम इस बफर्ड रीडर के अंदर देयर आर सो मेनी मेथड, लाइक वी हैव ए गेट रीड लाइन एंड ऑल दोज थिंग्स. सो वी कैन यूज ऑल दोज मेथड इफ वी आर यूजिंग दिस बफर्ड रीडर क्लास ओवर हियर. ठीक है. तो हमने क्या करना है, बफर्ड रीडर. ठीक है. सो वी हैव बी आर इक्वल टू, ठीक है. सो वी हैव न्यू बफर्ड बफर्ड रीडर. ठीक है. सो वी हैव वन method over here that is new input stream reader. Why we are using input stream reader, because this buffer reader is used for reading the data only. System dot in. System dot is what, that at the time we are not passing any string over here, it will directly read all those things that we are passing. uh, we can say that it is taking all those streams immediately from the user. ठीक है. तो हम कोई पास नहीं कर रहे हैं स्ट्रीम, वी आर गेटिंग ऑल दोस वैल्यू फ्रॉम द यूजर. तो ये कंसोल इनपुट लेगा. सो कंसोल इनपुट के लिए वी हैव ए सिस्टम क्लास ओवर हियर. ठीक है. तो उस सिस्टम क्लास के ऑब्जेक्ट की मदद से वी कैन डायरेक्टली टेक द वैल्यूज फ्रॉम द यूजर एंड शो इट टू द अनदर पास एंड शो इट ऑन द अनदर मशीन. ठीक है. तो ये हमारे पास ये चीज आ गया. अब हमारे पास है, अब क्या करेंगे हम, वी आर टेकिंग टू स्ट्रिंग्स ओवर हियर. वन स्ट्रिंग इज लाइक str equal to, okay, and another string is str2. So we are using these two strings over here. Why so? Because one string we will be using for this writing part and the another string we are using for this reading portion over here. So what we now, let's suppose we need to stop this communication also somewhere. So हम क्या करेंगे, str dot equals. ठीक है. तो अगर मान लो कहीं पर स्टॉप आ गया तो वो इमीडिएटली उसको कम्युनिकेशन को बंद कर देगा. ठीक है. सो वी हैव str equal to br. br is the buffer reader object that is used to read line. read line. ठीक है. नेक्स्ट वी हैव dout, that is the output stream. ठीक है. object for the output stream. write.
So we are writing something using this output stream UTF STR. ठीक है. So whatever the lining uh, whatever the line we are reading over here, ठीक है, तो उसको हम write भी कर सकते हैं. तो हम क्या करेंगे कि जब तक stop नहीं मिलेगा हमको, ठीक है, we can read that particular line and on the another side we are writing that particular line. ठीक है, तो ये दोनों काम हमारे वाइस वर्सा वाले डील में हो जाएंगे. ठीक है, एक तरफ हम लिख रहे हैं, ठीक है, बट सेम लाइन ऑन द अदर साइड विल बी रेड. ठीक है, तो सेम लाइन हम दूसरी मशीन पर रीड कर रहे हैं. ठीक है, जैसे आप हेलो पास कर रहे हो, यू आर राइटिंग दैट हेलो ओवर वन मशीन, ऑन द अदर मशीन यू आर रीडिंग दैट पर्टिकुलर लाइन दैट यू आर गेटिंग फ्रॉम दिस क्लाइंट मशीन ओवर हियर. ठीक है, सो दिस इज एस टी आर इक्वल टू रीड लाइन, that is BR with the help of the buffered reader, और dout dot write UTF. ठीक है, तो आउटपुट स्ट्रीम की मदद से यू आर राइटिंग ऑल्सो द सेम लाइन. तो राइटिंग के लिए हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, फ्लश यूज कर सकते हैं, दैट कैन इमीडिएटली फ्लश द सेम लाइन एट द डेस्टिनेशन पार्ट. ठीक है, नेक्स्ट इज एस टी आर टू इक्वल टू डी आई एन. अब ये डी आई एन किस लिए है, इनपुट स्ट्रीम. ठीक है, सो ये एस टी आर हम रीडिंग के लिए ले रहे थे, ये एस टी आर टू हम किसने, हम that for we are using this str for writing part and this str for the reading part. अब रीडिंग कहाँ से होगी, जब वो सर्वर कुछ लिखेगा उसको. ठीक है, so I know that these terms are quite confusing to you, but आप जैसे if you implement this one to form, then you will able to understand कि ये सारी लाइंस क्या मतलब कर रही है. ठीक है, so we have system dot out, और ये चीज़ आपको हेल्प कर सकती है इफ़ यू आर मेकिंग योर प्रोजेक्ट्स, आप उस स्टेज में यू कैन यूज ऑल दोस. ठीक है, अब ये एस टी आर टू क्या कर रहा है, इट विल टेक दैट इनपुट से, डी आई एन क्या है, इनपुट स्ट्रीम, व्हेन यू आर गेटिंग सम इनपुट. ठीक है, तो आपने क्या किया, डी आई एन डॉट रीड यूटीएफ. रीड यूटीएफ क्या होगा, जब आपका सर्वर कुछ लिखेगा आपके लिए एंड यू आर रीडिंग दैट पर्टिकुलर डेटा. तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सर्वर सेज, सर्वर ने आपको ये मैसेज भेजा है. सो जस्ट फॉर योर कन्वीनियंस वी आर राइटिंग लाइक दिस, सर्वर सेज. ठीक है, तो हमारे पास क्या सर्वर कर रहा है, इट इज एस टी आर टू. ठीक है, अब है डी ओ यू टी डॉट क्लोज. फाइनली वी विल क्लोज दिस पर्टिकुलर सेशन ओवर देयर. एस डॉट क्लोज. ठीक है, डी आउट को भी क्लोज कर दिया और फाइनली आउटपुट स्ट्रीम को भी, और एस को भी हमने सॉकेट को भी क्लोज कर दिया. सो वी आर राइटिंग लाइक दिस. ठीक है, सो इसको सेव कर देते हैं, कंट्रोल एस, दैट इज क्लाइंट टू डॉट जावा. ठीक है, अब सेम थिंग ऑन द सर्वर साइड. अब सर्वर साइड में क्या होगा, सारी चीजें जो हमने यहाँ पर डिफाइन की हैं, सेम चीज वी आर डिफाइनिंग एट द सर्वर साइड ऑल्सो. ठीक है, तो आई जस्ट सी कि एवरीथिंग इज सेम, बस हमें यहाँ पर, चलो आई जस्ट राइट ऑल दो थिंग्स. सो आई जस्ट वांटेड कि थोड़ा जल्दी हो जाता, बट चलो इट्स ओके. ठीक है, सो वी कैन राइट लाइक दिस अगेन ऑन द सर्वर साइड. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू एस्टेब्लिश द कनेक्शन. तो हमने कहाँ से कनेक्शन आ रहा है हमारे पास, सॉकेट से. सो सॉकेट एस इक्वल टू, वी आर एक्सेप्टिंग दैट पर्टिकुलर कनेक्शन, एक्सेप्ट. ठीक है, अब अगेन डेटा वी हैव टू यूज टू टाइप्स ऑफ स्ट्रीम बिकॉज वी आर राइटिंग ऑल्सो and we are reading also. Two-way communication is there. Data input stream DIN equal to new data input stream. Okay, so what we are using for that, that is s dot get input stream. ठीक है,
Again we have a data output stream, that is d out equal to new data आउटपुट स्ट्रीम. ठीक है, दोनों चीजें क्यों लिख रहे हैं हम? बिकॉज वी वांट टू वे कम्युनिकेशन. सो वी डोंट नो कि एट व्हाट टाइम व्हाट वाई वी आर रीडिंग समथिंग और राइटिंग समथिंग. तो वो सारी चीजों को कौन हैंडल करेगा? हमारी स्ट्रीम्स हैंडल करेंगी. गेट आउटपुट ठीक है. अगेन वी हैव ए बफर्ड रीडर. Buffered reader is we require because we are immediately reading and reading that data. ठीक है, तो it will save that data for a while. अगर दोनों वजह से कम्युनिकेशन है तो उसको मैनेज करने के लिए we require this buffered reader. ठीक है, so buffered reader B buffered reader is there and we can have new input stream. इनपुट स्ट्रीम के साथ ही बफर रीडर होगा बिकॉज वी आर रीडिंग दैट पर्टिकुलर डेटा. सो बफर इनपुट स्ट्रीम रीडर इज देयर. स्ट्रीम रीडर कहाँ से इनपुट करे? सॉरी, ये कहाँ से करेगा? सिस्टम से. ठीक है, सो कंसोल इनपुट से इट इज टेकिंग दैट वैल्यू. वी हैव सिस्टम डॉट इन. ठीक है, so again we can use this strings, two strings we are using. String equal to okay, so we are using str equal to. ठीक है, then we have str2 equal to. So same thing that we have done in that particular client part. ठीक है, so we are using the same thing over here. So I just copy all those lines that it again it will check for all those value. ठीक है, तो while string str equals to stop. ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा? हमारे पास ये रीड करेगा डेटा को. ठीक है, सो मैं बस यही लाइन को कॉपी करती हूँ. सो वी कैन से दैट while str. ठीक है, स्टॉप आ जाएगा. बट इस केस में क्या होगा? इस str इट विल read that particular din. din is for the data input stream. ठीक है, dot read utf. ठीक है, ये डाटा को क्या कर रहा है? हमारे पास सिर्फ रीड कर रहा है. फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल जस्ट रीड दैट पर्टिकुलर डेटा एंड इट विल से कहाँ से रीड कर रहा है? जो क्लाइंट भेजेगा उसको राइट करके. ठीक है, सो इट कैन जस्ट से लाइक दिस सेट सिस्टम डॉट आउट डॉट println client says. ठीक है, सो इट इज टेलिंग यू व्हाट क्लाइंट वांट्स टू से. बिकॉज उस टाइम पे हम क्या कर रहे थे? क्लाइंट वाज इन फर्स्ट स्टेप, क्लाइंट वाज राइटिंग समथिंग. तो उसको हैंडल करने के लिए वी हैव दैट समथिंग टू हैंडल दैट क्लाइंट वैल्यू ओवर हियर. दैट इज द सर्वर विल हैंडल दिस पर्टिकुलर सिचुएशन. ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा था? दैट इज रीड लाइन ओवर हियर. ठीक है, सो उसको राइट कर सकते हो कि अगर तो कोई लाइन है ठीक है, नहीं तो अपना वो राइट करना शुरू कर देगा क्लाइंट. ठीक है, तो सिमिलरली वी कैन पास दिस क्लाइंट सेज प्लस we just show that particular message over here. ठीक है, और बाद में we have str2 equal to buffered reader से. ठीक है, कहाँ से वो रीड करेगा? buffered read line. This is one of the method of this buffered reader. read line. ठीक है, and it can write dout dot write utf. ठीक है, so it can write that particular str2. ठीक है, जो भी स्ट्रिंग पास होगी इट कैन राइट दैट पर्टिकुलर.
ठीक है, ठीक है, ये क्लाइंट से जो भी मैसेज आया उसको रीड किया, ठीक है, इट कैन डिफाइन दैट पर्टिकुलर मैसेज, बफर रीडर से उठाएगा, किस में डालेगा, str2 पे, और फाइनली इसको राइट कर देगा, ठीक है, ऑन इट स्क्रीन। तो अगेन इट कैन फ्लश आउट dout डॉट फ्लश, ठीक है। तो फ्लश क्या करता है, इमीडिएटली आपके मैसेज को वहां पर डेस्टिनेशन जो स्क्रीन है वहां पर डिस्प्ले करा देगा, ठीक है। सो यू कैन राइट लाइक दिस, सो din डॉट क्लोज, ठीक है, यहाँ पर इनपुट स्ट्रीम को क्लोज कर दिया, यू कैन हैव टू क्लोज दैट कनेक्शन सॉकेट फॉर दिस क्लाइंट मशीन ऑल्सो, ठीक है, और फाइनली अपना कनेक्शन भी ये क्लोज कर देगा लाइक दिस। Okay, student, this was just related to your this networking part. If you feel like any problem, we can discuss when we will start with the practical portion also. Okay. So this is just, we can say that for your this knowledge, we are just this is the first very lecture that is related that how we can communicate between the different, we can say that machine over system, ठीक है। सो ऐसा नहीं है कि इसके बाद खत्म हो जाएगा, इफ यू फील लाइक एनी प्रॉब्लम वी कैन डिस्कस ड्यूरिंग आवर प्रैक्टिकल क्लासेस आल्सो। सो आई जस्ट सेव दिस प्रोग्राम सर्वर 2 डॉट जावा, ठीक है, ये चीज़ आ गई हमारे पास। अब इसको रन करके देखते हैं। अगेन आई विल टेक 2 स्क्रीन्स ओवर हेयर, ठीक है, और ये आ गई, ये सर्वर के लिए, ये हमारे पास क्लाइंट था, ये हमारे पास सर्वर है, ठीक है, ये क्लाइंट का कमांड प्रॉम्प्ट है, इसको इसके साथ कर देते हैं, ठीक है, एंड दिस इज द कमांड प्रॉम्प्ट फॉर द सर्वर पार्ट, ठीक है। सो अगेन आई जस्ट रन दिस मशीन, सो वी हैव जावा सी server 2, there could be chances of error because cannot find symbol, oh command, ठीक है, I just check to it कि okay, so I just run this clear the screen and you can see that now this code is fine, okay. So on the client side also I run this client machine, that is java c client 2 dot java, data output stream, okay, that I need to, O should be capital over here, and again I run this program, okay. So you can see over here that both these machines are fine, so I just again compiled it, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ पर I just run this program at the server side java, ठीक है। So we are having this server 2, okay, and now I run this client portion also, so let's suppose I am writing like this, hello server, okay. So you can see this particular thing has been read over here. So now let's suppose I am saying I am fine,
The server say I am fine over here. Clear? So again on this side I can say what are you. Like anything I can pass. This is the way how we can chat with. So see, this is the way that how this client says. जब वो लिखेगा तो ये रीड कर रहा है. ठीक है. So when it is writing something, so this client machine is reading that data. तो इन सब की मैनेजमेंट कैसे हो रही है? दैट इज विद द हेल्प ऑफ ए बफर रीडर. ठीक है. सो दैट्स वाई इफ यू नीड टू वे कम्युनिकेशन वी रिक्वायर दिस बफर रीडर that will store all those things and it will just immediately flush all those values. ठीक है. Just to see that okay, that how we can pass all those messages from one machine to the another machine. Now let's suppose I need to stop. तो मैं यहाँ पर लिखती हूँ स्टॉप, क्योंकि स्टॉप हमने एक स्ट्रिंग दी है. सो यहाँ पर लिखना पड़ेगा बिकॉज दिस मैसेज है. अब क्लाइंट ने बोल दिया स्टॉप, तो दोनों तरफ इफ यू सी दैट वी हैव यूज दैट स्ट्रिंग ओवर हियर. ठीक है. तो ये अभी स्टॉप करेगा कनेक्शन अपना. सर्वर से स्टॉप. ठीक है. तो अब हम क्लाइंट ने भी बोल दिया स्टॉप. ठीक है. एक मिनट स्ट्रिंग देखने दो, मैंने ठीक पास की है. कनेक्शन बंद होना चाहिए यहाँ पर. आई नीड टू वेट फॉर ए वाइल बिकॉज उसके बाद फिर आपका डायरेक्टली कमांड प्रॉम्प्ट में यू कैन गेट. ठीक है. बिकॉज आपने स्टॉप कर दिया ना यहाँ पे कनेक्शन, तो वो अपने आप बंद कर देगा. इट विल डायरेक्टली कम टू दैट कमांड प्रॉम्प्ट ओवर हियर. Okay, students, you can run the same thing. I think there must be some this connection problem could be there. ठीक है. तो आप डायरेक्टली देखना कि जब इफ यू स्टॉप ऑल दोज थिंग्स, सो इट विल डायरेक्टली स्टॉप एट दैट पर्टिकुलर पार्ट और बाद में आपका कमांड प्रॉम्प्ट आ जाता है डायरेक्टली. तो आई थिंक सम आई एम मिसिंग समथिंग. So you can check to this that while using this stop, your this command from this connection is get stop after using this command. You can write anything on behalf of this stop. ठीक है. आप कुछ भी लिख सकते हो बिकॉज मैंने एक स्ट्रिंग पास की है. जैसे ही वो उसको वाइल में उसको चेक करेगा कि दैट इफ दैट पर्टिकुलर वैल्यू इज इक्वल टू दैट स्टॉप पार्ट, तो वो अपने आप उसको रीड करना बंद कर देगा. ठीक है. So further I can check for that or we can share in this practical portions also. So in that case you can see that how we can use
how we can just immediately pass this messages from machine guard. ठीक है. Okay, so this was for today's session. So अगर ये stop भी चल जाता तो थोड़ा complete हो जाता, because I think I am missing something. So I just tried it afterwards and tell you later on कि ये यहाँ पर क्या गड़बड़ आई थी. Okay. So before moving further, you can just I am just sharing polls with you. So kindly see to this. So I am launching the third poll with you. Okay, students, I am going to end the poll. Okay, the answer for this is that is public socket accept. This is the most commonly used server socket class. ठीक है, close दोनों में होता है, पर जो accept है that is specifically used for the server socket class. ठीक है, so most of the students have given the right answer. So एक और पोल है, फिर उसके बाद देखो before that poll you can see that ये stop हो गया हमारा यहाँ पर connection. I think we have to wait for, after writing this stop part, we have to wait for this particular for a while, और तब उसके बाद जाकर you can see that you can get this particular command prompt over here. Clear? चलो अब next poll जो है वो भी हम last poll we can discuss.
Okay, students, I am going to end the poll. Okay, so I'm sharing results with you. So this is the object of URL class is used to send an HTTP request. Okay, so this was just for your information. You have we have already done that URL class in our session also. So this is just for your this part that how we can request that HTTP request on a web server, that is with the help of a URL class. Okay. Okay, students, so this was all about today's session. So I will not say this that it is the last session, because I just informed you earlier also that we are going to organize that practical portion also. Let's see what response that we will get from the college about your schedule, and what about you also, that how you will be attending all those classes with us. Okay, so we just feel like that it should be safe for everyone if you are coming to the college, and also it will benefit you also, that we can implement and we can talk, we can have that communication with each other more easy, in a more easy manner. So I hope all this I just tried my best कि मैं आपको best of the best knowledge दे सकूं according to your syllabus. But okay, I have unmuted you all. So if you want to share your experience with me, so you can